बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द बर्थ ऑफ साइंटिफिक इंग्लिश। ये रीडिंग पैसेज 3 है, टेस्ट 2 है और ये हम लोगों ने बुक 5 से लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टाइटल को देखते हैं, टाइटल किस के बारे में है। टाइटल क्या है हम लोग, द बर्थ ऑफ साइंटिफिक इंग्लिश। साइंटिफिक इंग्लिश थी जो थी उसके उसकी बर्थ कैसे हुई थी। हम लोग क्या करें, सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। अब हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? डेट्स, months, years and nouns. Present, past और फ्यूचर, इन सब को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। इनको अंडरलाइन करेंगे तो हम लोग जो हमारा टास्क है जो हम 20 मिनट में कंप्लीट करते हैं उसको हम मैक्सिमम 15 या 12 मिनट में कंप्लीट कर सकेंगे। सबसे पहले आपने जब एग्ज़ाम में बैठा है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, इसके अलावा आपने पूरे पैसेज को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपका 20 मिनट पढ़ने में ही निकल जाएंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। वर्ड साइंस इज डोमिनेटेड टुडे बाय अ स्मॉलर नंबर ऑफ लैंग्वेज। टुडे प्रेजेंट की बात होगी। जर्मन, जापानीज, जर्मन, global language of science. This is not just because of the importance of English speaking countries such as the US in scientific research. The scientists of many non English speaking countries find that they need to write their research papers in English to reach a wide international audience. Given the prominence of scientific English today, it may seem surprising that no one really knew how to write science in English. बिफोर द 17वीं सदी से पहले किसी को भी नहीं पता था कि साइंस को इंग्लिश में कैसे लिखना है। बिफोर दैट लैटिन वाज रिगार्डेड एज द लिंगवा फ्रांसा फॉर यूरोपियन इंटेलेक्चुअल। बिफोर दैट, इससे पहले जो लैटिन थे सिर्फ वो ही उन्हीं को पता था। लैटिन वाज रिगार्डेड एज द लिंगवा फ्रैंका। जो लैटिन थे वो हर तरह की ज़ुबान जो है वो बोल भी सकते थे और समझ भी सकते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि जो जर्मन थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज थे, वो तो इंग्लिश में साइंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना ही चाहते थे, लेकिन जो नहीं थे वो भी करना चाहते थे। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 28 to 34। नो मोर देन 2 वर्ड, 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा हमने यहाँ पे नहीं लिखना। और क्वेश्चन नंबर 28 to 24 हम लोगों ने फिल करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। In Europe, modern science emerged at the same time as the nation state. At the first, the scientific language of choice remained. In Europe, modern science emerged at the same time as the nation state. At first, the scientific language of choice remained. Scientific language. यहाँ पे देख लें, today it may seem certain that no one really knew how to write science in English before the Latin was regarded as a lingua franca. सिर्फ remained, Latin जो थे ना वो ही सब कुछ जानते थे, तो वो जो है वो मौजूद रही थी। It allowed scientists to communicate with other socially privileged thinkers while protecting their work from unwanted exploitation. That to protect knowledge seems to have been stronger than the desire to communicate them, particularly in the case of mathematicians and dash. In the case of mathematicians and dash. अब देखिए मैथमेटिशियंस एंड डैश किधर है, ये आ गया मैथमेटिशियंस। ऊपर देखेंगे हम लोग, understood and men of the trade who lacked classical education and in the invents and common practice for mathematicians to keep their discoveries and proofs secret by writing them in cipher. वो क्या करते हैं, to keep their discoveries and proofs secret by writing them in cipher in obscure language or in private messages deposited in a sealed box with Royal Society. Some scientists might have felt more comfortable with Latin precisely because its audiences, though international, was socially restricted. Doctors clung the most keenly to Latin as an insider language. जो डॉक्टर्स थे वो भी लैटिन को ही यूज़ करते थे इंसाइडर लैंग्वेज के तौर पे। तो आंसर क्या है, मैथमेटिशियंस और डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल करते थे। In Britain, moreover, scientists worried that English had neither the dash nor the dash. English had neither the dash nor the dash. अब हमने सर्च क्या करना है, ये देखिए ज़रा। In Britain, a third reason why the writing of original science in English was delayed may have been
Inadequacy of English in the early modern period, English was not well equipped to deal with scientific argument. First, it lacked the necessary technical vocabulary. Secondly, it lacked the grammatical resource. तो सबसे पहला क्या है? vocabulary. दूसरा क्या है हमारा? lacked. Second, lacked the grammatical resources. Grammatical. GRAMMAT, grammatical resources. Next paragraph 1660, when scientists associated with the dash. 1666, 1660. ये 1664 है और ये आएगा 1660. England was one of the first countries where adopted and publicized Copernican ideas with enthusiasm. Some of these scholars, including two of them interested in language, John Villiers and John Villiers, Society in 16 in order to promote empirical scientific. यहाँ पे आ रहा है हमारा रॉयल सोसाइटी. Changed after 60 when scientists. The situation only changed after 60 when scientists associated with the Royal Service about developing English. Empirical scientific research. आंसर क्या है इसका? रॉयल सोसाइटी. An early scientific journal fostered a new kind of writing based on short descriptions specific. Although English was then overtaken by. अब इसको किसने overtake किया था? It developed again in the 19th century. Overtaken by, ये आ गया 19th century. इसके ऊपर है. In the 17th century was thus a formative period in the establishment of scientific English. In the following century, much of this momentum was lost as German established itself as the leading European language of science. तो जर्मन ने इसको ओवरटेक किया था. आंसर क्या है इसका? ओवरटेकन बाय जर्मन. It developed again in the 19th century as a direct result of the dash. 19th century scientific English again enjoyed substantial developed again growth as the industrial revolution created need for new technical vocabulary. Industrial revolution, direct result of the industrial revolution. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 to 34. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 35 to 37. Do the following statements agree with the information given reading passage 3. ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है? जो पैराग्राफ में दी गई हो और क्वेश्चन में भी दी गई. फॉल्स स्टेटमेंट क्या? जो पैराग्राफ में भी दी गई और क्वेश्चन में भी लेकिन गलती से गलत लिख दिया गया हो. नॉट गिवन क्या होता है? जो कि दिया ही ना गया हो. देयर वाज स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन साइंटिस्ट इन रेनेसेंस यूरोप. स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था या नहीं था? तो यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं हुई पैराग्राफ नंबर 2 में, तो हम लोग इसका आंसर क्या कर देंगे? नॉट गिवन. नेक्स्ट में द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट द रेनेसेंस पीरियड वाज द डिक्शनरी और डिस्कवरी ऑफ मैग्नीशियम. ये आ गया डिस्कवरी. यहाँ से पढ़ लेते हैं. England to America and East to India was supported by scientific developments such as the discovery of magnesium, improvements in cartography, and perhaps the most important scientific revolution of them all, the new theories of astronomy and movement. किस चीज़ की रेवोल्यूशन चाहते थे? एस्ट्रोनॉमी एंड मूवमेंट की. तो हमारा आंसर इसका क्या है? फॉल्स है. नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 37 पे. In 17th century Britain, leading thinkers combined their interest in science with an interest in how to express ideas.
साइंस और आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं, इसके साथ हमने 17th सेंचुरी ब्रिटेन। ये है हमारा 17th सेंचुरी और ये भी हमारा 17th सेंचुरी। ब्रिटेन ये क्या है, लैटिन। ये लैटिन। Fortunately, several members of the Royal Society possessed an interest in language and become engaged in various linguistic projects, although a proposal in 96 हमें क्या कहते हैं, the essential language Britain leading thinkers combined their interest in science and with interest in hot express ideas. So they possessed an interest in language and become engaged in various linguistic projects. In language or linguistic projects, establish a committee for improving the English language came too little. The society members did a great deal to the science in English and to encourage the development of a suitable writing style. ये suitable writing style, तो हमारा आंसर इसका क्या है, ये ट्रू है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35 to 36 37। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 38 to 40 पे। नो मोर देन 2 वर्ड, 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा आपने यहाँ पे नहीं लिखना। Write your answers in boxes 38 to 40 on your answer sheet. Science written in the first half of the 17th century. Language used Latin, English. Language Latin. Type of science क्या है? English की English dash original. Type of science original. Seventeenth century. First half of the 17th century. The mid 17th century was common practice to keep their discoveries and prove secrets by writing private passages of the sealed box with the words. Some scientists might have felt more comfortable with Latin precisely because its origins नहीं, यहाँ पे ये भी 17th century. Across Europe, similar academies and societies arose, creating new national traditions of science. In the initial stage of the scientific revolution, in the national language are popular encyclopedias. Scientific revolution क्या था? Most publications in national language were popular encyclopedias, educational textbooks, and translations. Original science was not done in English until the second half of the century. For example, Newton published his mathematical treatise Principia, but published his later work on the properties of light. Principia in Latin, ओरिजिनल। और यहाँ टाइप ऑफ साइंस क्या है, ये लैटिन क्या है, एग्जांपल्स इसका प्रिंसिपिया और इसका क्या है, इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट पे ज़रा, टारगेट ऑडियंस इंटरनेशनल स्कॉलर्स बट सोशली वाइडर। टारगेट कौन से ऑडियंस इन्होंने किए थे? Whereas English reached a socially wider but more local audience, here popular science was written in English but socially wider but more local. Socially wider but more local. तो क्वेश्चन नंबर 38 ओरिजिनल, और ये क्या था? Across your similar academic society are creating a new national tradition of science. In the initial stage of scientific revolution, most publications were popular works, encyclopedia, educational. Original science original
इसका ओरिजिनल टाइप ऑफ साइंस क्या है? ओरिजिनल है। और ये टाइप ऑफ साइंस क्या है? ये तो ओरिजिनल साइंस है।